पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा और फिर वहां वेद मंत्रों की ध्वनिया गूंजेगी। ओम नमः शिवाय का जाप होगा। It's a big victory for the Hindu side, a big victory for the Hindu side. After 31 years, they will be allowed to pray in the Gyanvapi mosque basement like it was in 1993. We have Alok Kumar of the VHP. Alok Kumar ji, मेरी आवाज आ रही है आपको? आलोक कुमार जी नमस्ते, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छे से आ रही है। हेलो, हाँ जी, बड़ी जीत है। इट्स अ बिग विन फॉर द हिंदू साइड। आलोक कुमार जी, आपका कहना क्या है? I feel that this is a victory of the justice. This is a place which always belonged to Hindus and which was taken away by force. The international law and conventions provide that the rights of indigenous people have to be restored to them, including their places of worship. So therefore, the order that has been given is in accord with the law, including the international conventions. We welcome this, and this is the beginning of our success to reclaim the Gyanvapi mosque for the Hindu temple. You think this, I mean, this is what the Hindu side always wanted, Alok Kumar ji. This is what you wanted always. Why has it taken so long? Why has it taken so long? We lived in an era of pseudo secularism where everything to the Hindus was denied in law and in the environment existing at that time. Now that environment has gone away, the judiciary is its job of providing justice without any fear or favor, and this is the victory of justice. Big moment for the Hindu side. Alok Kumar ji and the VHP also had demanded that they be allowed to pray. That is, the Hindu side wanted Hindus to be allowed to pray. The Gyanvapi side, it will now be allowed. In 7 days from now, after 31 years, it's a big moment, ladies and gentlemen, a big moment. Thank you, Alok Kumar ji, Alok Kumar of the VHP joining us there. Thank you very much. You're welcome. We're taking a short break. When we come back, focus. Thank you so much. Taking a short break. Okay. When we come back, Arvind Kejriwal has been summoned. Another time. Thank you, sir. Thank you. Arvind Kejriwal has been summoned. We're coming back with details of that story and much more. Stay tuned to Republic TV. देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। And the big focus this hour, Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister, Chief of the Aam Aadmi Party. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been summoned once again by the Enforcement Directorate under the scanner in Liquorgate. He's been summoned for a 5th time. He's evaded the Enforcement Directorate summons. Each time he's been called. Will Arvind Kejriwal appear before the Enforcement Directorate this time around? That's the focus this hour. I'm going across to my colleague Shawan. Shawan, it's a dodgy question whether he will appear or not. What are the risks Arvind Kejriwal is taking by dodging these summons again and again?
I'm going across to my colleague Shravan Sen once again. Arvind Kejriwal has been summoned. He's been asked to appear by the Enforcement Directorate. And this is the fifth summon that Arvind Kejriwal has received from the agency that is probing the liquor scam. He's been asked to appear on the 2nd of February, that's the day after tomorrow. This is in the Delhi excise policy case or liquor gate, liquor scam. He's been asked to appear on the 2nd by the Enforcement Directorate, which has arrested several people already in this particular case, in which even the Aam Aadmi Party is being looked at as an accused. First time where a party itself is being looked at as an accused. Shravan Sen with the details. Shravan, will he have to appear? What happens if he doesn't? Shravan. Well, in fact, Niranjan, this is the fourth summon that has been sent out to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Now, as far as whether at all Arvind Kejriwal is going to appear before the Enforcement Directorate or not, no official word has really come in from the Aam Aadmi Party as yet. As far as the Enforcement Directorate is concerned, if he does not appear this time, they certainly have the option of moving the court with regards to a non-bailable warrant against the Chief Minister on the grounds that he hasn't been cooperating. Now, that is an option that the Enforcement Directorate has. It is the prerogative of the agency whether they are going to exercise it or not. Because if you take a cue from what has happened in the case of Jharkhand Chief Minister, then almost 10 summons were actually sent out. It totally depends on the federal agency whether at all that decision is going to be taken or not. The reason why Arvind Kejriwal has been called in for questioning by the Enforcement Directorate is only because the Enforcement Directorate wants to give the Aam Aadmi Party chief an opportunity to explain whether at all the money that was allegedly received by the party, was it some sort of a quid pro quo, or was it the cut money that was allegedly received by the party from the liquor scam? Because remember, the decision that was taken by the then Deputy Chief Minister Manish Sisodia to change the profit margin from 5 to 12% is essentially the money that the Enforcement Directorate suspects was the cut money that allegedly received by the party. That is exactly why during the course of the investigation and in multiple hearings before the court, it is the Enforcement Directorate that has argued that there is a possibility that they may consider making Aam Aadmi Party as an accused in this particular case. Shravan, thank you for joining us with those inputs. Shravan joining us with the details as Arvind Kejriwal is summoned another time in the Delhi liquor scam. Not just Kejriwal, another Chief Minister, Hemant Soren, is also under scanner. That's a different case altogether, but two Chief Ministers directly coming under scanner here. Let's move on now and get you the other big political news in this election season. Running up to the Lok Sabha elections of 2024, Nitish Kumar, the Bihar Chief Minister, he continues to be the Bihar Chief Minister year after year, party after party, changing alliance after alliance, and from praising Rahul Gandhi a few days back to slamming Rahul Gandhi now for what he calls fake credit, taking fake credit for the caste census. Here's Nitish Kumar attacking Rahul Gandhi, who was a friend until recently. इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ? आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए, और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं, कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 मैंने किया। From one broken alliance to another possible breakup, Nitish is out. Will Akhilesh Yadav be next? Yesterday, Akhilesh Yadav's party, the Samajwadi Party, released a list
announcing 16 names. They put out a list, putting out 16 names for the upcoming Lok Sabha elections, indicating that all's not well. It was not the India Alliance list that was released. Akhilesh Yadav declared that 16 members of his party would be contesting the elections in a breakaway, in a clear breakaway with the talks that they're having with the Congress party. Congress wants to contest in 23 seats in Uttar Pradesh as per sources. But Akhilesh Yadav not willing to concede over 16 seats to the Congress party in India's largest state, Uttar Pradesh, which will hold key to who forms the government at the centre in 2024 in May this year, indicating that all's not well. Akhilesh Yadav unhappy as seat sharing talks we hear have hit a deadlock. My colleague Ajay Dubey is now joining us on the phone line with more details on this breaking election story. Ajay, क्या हम कह सकते हैं कि अभी ब्रेकअप हो चुकी है इनका? देखिए, कागजी तौर पर ये बातें अभी पूरी तरीके से खुलकर आई हैं, नहीं आई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो कांग्रेस की मांग है, जिस एग्रेशन के संग समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान किया है, जिन सीटों पर कांग्रेस अपने बड़े लीडर्स को लड़ाने की तैयारी में थी, उन सीटों पर सपा ने आगे बढ़कर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जो सीटों के गठबंधन की बात है, वो भी एक तरफा ऐलान कर दिया है। इन सब चीजों से बिल्कुल ये लग रहा है कि सपा जो है सीधे सीधे जो प्रेशर है वो बनाने की कोशिश कांग्रेस के ऊपर कर रही है, और निश्चित ही उसी का असर इस जो लिस्ट है इसके जरिए देखने को मिल रहा है। अभी हमें यह भी बताइए कि कांग्रेस को कितना सीट चाहिए वहां पे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी का कहना क्या है इस मामले पर? क्या कांग्रेस का उतना स्ट्रेंथ है ग्राउंड पे? उनको चाहिए 23 शायद, लेकिन क्या उनके पास उतना स्ट्रेंथ है इतने सीट लड़ने की? 25 सीटों पर कांग्रेस बात कर रही थी कि हमें 25 सीटें चाहिए, 22 से 25 पर बात बनती दिख भी रही थी, लेकिन जो 2009 के चुनाव का परिणाम है उसका रेफरेंस कांग्रेस दे रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि किस बूथ पर आप मौजूद है, कैडर पे किस पे मौजूद है। इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस एक हद तक दे नहीं पा रही, इसलिए बेहद आक्रामक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से फैसले ले रही है और लिस्ट निकाल रही है।